आज का एपिसोड इज टेकिंग मी बैक टू द टाइम्स जब ये शो शुरू हुआ था। मैं अपने घर में होती थी और ये शो रिकॉर्ड करती थी और सचिन और मैं एक जूम कॉल पर मिलते थे। उस टाइम पर हम लोगों से मिल नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज कोविड व्हेन आवर शो स्टार्टेड। बट पिछले कुछ दिनों से आई हैव व्हाट इज कॉल्ड अ मॉनसून नजला, एंड इसकी वजह से मेरी आवाज जो है बहुत सेक्सी लगेगी इस पॉडकास्ट पे। बट द ट्रूथ इज that I have a terrible cold and I think ये मौसम का जादू है मितवा। How are you doing, Sachin? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है मुझे, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी जो है वो पिछले 3 दिनों से आप ही की तरह शी इज डाउन विद अ रियली बैड कोल्ड। लेकिन स्कूल है तो जाना पड़ता है, अगर स्कूल में नहीं गए तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ वापस डॉक्टर। और जुकाम के लिए कौन डॉक्टर के पास जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए। So we are poor girl, we are pushing her to go to school, waking her up early morning at 6 o'clock, so that Just she's out because of the the house. parents cannot get a medical Cannot. I hope your daughter doesn't listen to this podcast. 10 years later, she's going to look back and look at my archives and say, "Baba, आपने ये किया था." Oh my God. But welcome to WhatsApp University, Jhakasya Bakwas. That is a little peek into our actual lives behind the podcast. इस podcast पर हम हर हफ्ते मिलते हैं और 3 ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आस्क सचिन कि सचिन क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है। एंड ऑफ कोर्स वीक बिगैन ऑन अ वेरी हाई नोट बिकॉज हफ्ते की शुरुआत में व्हाट वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इज द फैक्ट दैट दोबारा से चंद्रयान के मिशन पर हिंदुस्तान निकल पड़ा। एंड रॉकेट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जहां से रॉकेट्स जो है लॉन्च होते हैं हिंदुस्तान में। एंड नाउ आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज अ लिटिल मोर अवेयरनेस थैंक्स टू टीवी शोज लाइक रॉकेट बॉयज फॉर एग्जाम्पल, या फिर इवन मिशन मंगल। अगर आपको याद होगा मंगलयान की जो कहानी थी, मुझे आज तक याद है कि कैसे विद्या बालन ने पूरियों को तलते तलते एक्सप्लेन किया था कि कैसे हीट की वजह से जो रॉकेट है वो लॉन्च हो सकता है। बट एनीवे, I think popular culture की वजह से there is a heightened interest in our ISRO and their missions. आपको लगता है सचिन, let me start with that. Do you think that it has popularized the efforts of the ISRO in the last couple of years? बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया ने मिलकर ये फिनोमिनन एक जनरेट किया। देखिए, इसरो का जो रोल था भारत के डेवलपमेंट में, वो काफी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि 1950 के दशक से ही जो हमारे साइंटिस्ट्स हमारे रॉकेट्स के ऊपर या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो हम पढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे डॉक्यूमेंट्रीज में। आपको याद होगा फिल्म्स डिविजन के डॉक्यूमेंट्रीज आते थे। जब हम मूवीज जाते थे तो पहले 3 या 5 मिनट हम फिल्म्स डिवीजन के डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे। और वो एक सिंपल सा जमाना था, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक विज्ञान के ऊपर हमारा जो भरोसा है, विज्ञान के ऊपर हमारी जो आस्था है, वो बरकरार है 1950 के दशक से, जब से हम इंडिपेंडेंस पा चुके हैं तब से। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट फेमस थे 1950s और 60s में, सतीश धवन हो, होमी भाभा हो, तो ये सारे जो लोग हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो हमारे कंट्री के साइंस को, कंट्री के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो हमारे लिए क्या कह सकते हैं, एक देवता के समान है ना। तो जब हमने देखा कि इसरो ने 2014 में पहला चंद्रयान भेजा था, फिर 2019 में दूसरा चंद्रयान भेजा, 2023 में तीसरा अभी हम भेजे हैं। सो these are, and in between we also sent a mission to Mars. Okay, now the western countries had for a long time dismissed ISRO as a just another space agency. लेकिन आपको याद होगा करीबन 1 महीने पहले, 1 या 1.5 महीने पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर हमारा जो इसरो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था, और उसमें कहा था कि देखिए कि ये एक एजेंसी है भारत में, लेकिन इस एजेंसी ने इतने सारे रॉकेट्स लॉन्च किए हैं पूरे दुनिया के लिए, ना केवल सिर्फ भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए, दैट इट इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस लॉन्चिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, स्पेस क्राफ्ट लॉन्चिंग।
So, we have come a long way from what ISRO was 30, 40 years ago till now. And और देखिए, हमें खुद की डंका नहीं बजानी चाहिए, लेकिन जब मैं 9 साल का था, तब हमारे एक रिलेटिव थे, वो श्रीहरिकोटा में काम करते थे, वो साइंटिस्ट, और वो हमें ले गए थे एक वेदर सैटेलाइट के लॉन्च दिखाने के लिए। तभी हम सिविलियंस को अलाउड नहीं था वहां पे जाने, तो हम स्पेशल परमिशन लेके वहां पे गए थे। और जब मैं 9 या 10 साल का था, तब मैंने एक वेदर सैटेलाइट का रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा श्रीहरिकोटा में। सो आई एम All रियली right. ब्लेस्ड दैट आई saw that when I was 9 or 10 years It's old. like a thing, Yeah, it's like a yeah, thing. The ones who are fascinated about space travel, वो अलग ही एक एक जुनून बिल्कुल। होता है. एंड आई थिंक दैट इट यूजुअली स्टार्ट्स व्हेन यू आर यंग, सो अगर सडनली आपके आसपास के लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में, अपने बच्चों को जरूर इसके बारे में बताइएगा, बिकॉज आई थिंक दैट व्हेन यू ग्रो ओल्डर द फैसिनेशन फॉर फ्लाइंग और लॉन्चिंग थिंग्स Yeah. में decrease, but when you're younger. But I must tell you, Sachin, that there are a couple of pieces of news around this. मुझे अभी याद आया. First, let me ask you, has the Chandrayaan 3 been successful? I think we'll start with that question. And when do you, आप कब मानते हैं कि एक जो हम ये रॉकेट लॉन्च करते हैं और हम जब ये स्पेस मिशन पे जाते हैं, तो कब कहते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ है? Could you give us a little insight into Chandrayaan 3? या देखिए, चंद्रयान 3 जो है, वो हमारे LMV-3 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। और see, rocket launches are itself difficult. That's why it's called, rocket science. Or rocket science has become like a, metaphor for something very difficult. हम कहते हैं कि अरे ये तो रॉकेट साइंस है, मुझसे तो नहीं हो पाया, है ना। तो ये एक रॉकेट साइंस एक डिफिकल्ट चीज का मेटाफर बन चुका है। लेकिन इसरो के लिए, या फिर नासा के लिए, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए, जो इतने रॉकेट्स लॉन्च करते हैं, वो एक्चुअली द rocket launch itself was not 100%. It's not like, it's like saying Tendulkar scored a 50, so what, it's like that. हालांकि 50 रन स्कोर करने में भी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन फॉर अ तेंदुलकर टू स्कोर 50 is not the same, let's say, a Bumrah to score a 50, right? So that's a difference. So what I'm saying is that the rocket launch itself is not the success part of the project. The success part of the project will be a soft landing on the surface of the moon. देखिए, हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, नो रेफरेंस टू द मूवीज, द हॉरर मूवीज, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो चंद्र मून का, है कि ये वो रॉकेट चंद्रयान है. बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल, मंगलयान जो है वो मंगल पर जाने वाला था, करेक्ट? या सो हमने जब मंगलयान भेजा था, तो ये आर थिंग वाज वेरी क्लियर दैट भारत को ऐसी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम मार्स यानी मंगल तक पहुंच सके, उसका ऑर्बिट लेके स्टडीज करके फिर वो रॉकेट को, या फिर जो स्पेसक्राफ्ट है उसको डिच करें, या फिर उसको वापस लें। नाउ व्हेन यू गो टू मार्स, देयर इज वेरी लिटिल चांस फॉर इट टू कम बैक अगेन। बट द थिंग अबाउट द Chandrayaan is that it will go to the surface of the moon, conduct experiments. So that is what the main mission of Chandrayaan is. Chandrayaan 2 भी रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था, उसने वहां पर मून पे जाके ऑर्बिट भी किया, और इट ट्राइड टू लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, बट एट द लास्ट मोमेंट, द लास्ट 45 seconds, something went wrong. And so you can see how each and every second, each and every minute, and each and every hour is important for this mission. So the last 45 seconds is when the moon craft started to land on the moon. It didn't get the necessary softness in the landing, and it exploded there on the surface of the moon. आपको याद होगा, तब के सिवन थे हमारे इसरो के डायरेक्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जाके एक जादू की झप्पी भी दी थी, वो रोने लग गए वहां पे, क्योंकि उनके मन में पता था कि वो कितना, उनके साइंटिस्ट ने, उनके इंजीनियर्स ने कितना काम किया था वो चंद्रयान 2 को वहां तक पहुंचाने के लिए, और पिच लास्ट 45 seconds were so crucial. And this is where our successful. So Chandrayaan 3, the last landing on the moon, is so important. देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि
हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? Why is space exploration so important for Indian government or any other government when millions and billions of people are starving in the country? It's a legitimate question. But आपको याद होगा एक वेस्ट विंग नाम का एक सीरियल आता था, which was on the president of the US. उसमें एक बहुत ही famous, it was one of the best political shows of all time. But there is a particular scene in that TV show where the daughter of a minister asks one of the advisors to the president, and why are we spending millions of dollars when hundreds and millions of people are starving on earth? And he says, because it is important for man or humanity to explore. अगर हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते तो हम अमेरिका को डिस्कवर नहीं करते. अगर हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते तो कोई भी चीज हमारे पृथ्वी पर हम डिस्कवर नहीं करते. तो मनुष्य जाति का जो प्रोग्रेस है वो हमारे घर से बाहर जाने से ही हुआ है. There is no other way to interpret this. If we had stayed within the confines of the jungle, if we had stayed within the confines of the cave, we would have not reached where humanity is reached right now. And this is why exploring the moon, exploring the solar system, exploring Mars is so important. We need to go outside our comfort zone. We are adventurers at heart. Humans Yes. are adventurers at heart. Yes, absolutely. So right now, Chandrayan की अगर बात करें तो we are happy about how the Chandrayan has performed because उसकी जो second orbit है, according to the last report that I had read, successful हुई थी. हाँ जी. And now is there a third? Yeah. So what it does is it goes around the Earth, but in successively bigger orbits. So वो तो it मुझे goes. याद है, फिल्म की वजह से याद है. It goes further and further and further. Yeah. And I'm telling you, popular culture is so amazing. If you use the cinema medium, if you use like web series वगैरह to explain these things, आप समझ सकते हैं कि उसे ज्यादा बड़े orbits क्यों लेने पड़ रहे हैं. And the final date, आज हम जिस दिन ये podcast record कर रहे हैं, it's the 19th of July. The final date is actually next month. It's a month away from, which is 23rd of August. So technically, आप कह रहे हैं कि until the 23rd of August, we will hope that the Chandrayaan 3 actually मतलब holds fort, जिसे कहते हैं कि वहां पर टिके रहे, अपना काम करते रहे, and once it finishes, its landing successfully, and उसके बाद of course transmits data back, तब हम मानेंगे कि ये एक successful mission है. Correct? बिल्कुल बिल्कुल. My God. और एक और प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि 1969 में जब नासा ने अपोलो 11 का जो मिशन भेजा था, वो सिर्फ 4 दिन में चंद्रयान पर चंद्र पे पहुंच गया. तो हमें 45 दिन क्यों लग रहे? ये एक बहुत ही टेक्निकल सवाल है और मैं आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू आंसर दैट. लेकिन उसमें साइंस है. देयर इज अ रीजन व्हाई इसरो हैज डन what it has done. So ISRO has explained that in their website, why it takes 45 to 48 days to reach the moon, when in 1969 it just took 4.5 days to reach the moon. So there is a reason for that. और जो बड़े बड़े ऑर्बिट होते हैं, देखिए आप हाउ डू यू, हम जब एथलेटिक्स में हैमर थ्रो करते हैं तो हम पहले धीरे घूमते हैं और फिर suddenly to gain momentum we go really fast and then throw the hammer into the field. तो उसको एक स्लिंग शॉट इफेक्ट कहते हैं. तो आई थिंक वो मिशन मंगल ने में भी एक्सप्लेन किया था, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज एक्सप्लेन इन दैट मूवी एज वेल. So it reaches a certain point and it's like a slingshot, so it goes zoop like that, so it gains the speed because of gravity, and the gravity of the earth is escaped and we enter the gravity of the next celestial body, which is the moon. So that is what is required here, and even that is a very, very delicate procedure. So we need to be very careful at each of these stages. So it's really important that these scientists and engineers have got it 100% correct. Okay, so 2 pieces of news. Let's start off with the first piece of news. The first piece of news, of course, is that there is a video
Okay, this is so funny. It is so funny. Okay, there is a video of a person जो एक फ्लाइट में है, क्योंकि हमने आज हम एक्चुअली थोड़ा सा शायद ये एपिसोड एक डीप डाइव बन जाएगा ओके चंद्रयान के ऊपर, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज वी कांट गो इन प्लानिंग सो मच ऑल्सो, लेकिन हमने इतनी चीजें सीखी है चंद्रयान के बारे में या फिर स्पेस मिशन के बारे में. मे बी दिस विल बिकम दैट एपिसोड, आई डोंट नो, बट लेट्स सी. द पॉइंट बीइंग दैट थोड़ी देर पहले जब हम ये बात कर रहे थे, आई नेवर थॉट कि ऐसा हो सकता है क्या कि आप फ्लाइट में हो ओके और आप गुजर रहे हो श्रीहरिकोटा के ऊपर से, और उसी वक्त पर जब आप अपने फ्लाइट के विंडो से बाहर देखते हो, यू सी द रॉकेट लॉन्च. Oh my God, if that actually happens, how exciting would it be? Now, somebody thought of that, and I want to show you this video. Okay, जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर. Skip ऐड करते हैं. Here you go. And this is the video. जहां पर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर that there is a plane that is passing the plane के window से, and you can see at this point here that there's a rocket launching. Oh my God. And everyone share this video. It's gone viral. People have tagged Narendra Modi. People have tagged ISRO saying that beautiful view of Chandrayan 3. I'll be honest, I saw it. I said, wow, what are the chances कि आपने actually ये देखा? And then of course I want to ask you Sachin कि क्या ये actual footage है Chandrayan 3 का? टेक्निकली लोग ऐसा शूट कर सकते हैं, लेकिन जब स्पेस लॉन्चेस होते हैं तो इंडिया में उस सारे एरिया को नो फ्लाई जोन बनाया जाता है. हाँ, तो देर इज वेरी लिटिल चांस दैट इन इंडिया यू विल बी एबल टू सी अनलेस यू सी इट फ्रॉम सो फार. इट मस्ट बी एटलीस्ट 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर्स अवे. और आपको आपका अगर फोन इतना पावरफुल है और यू कैन सी इट, इट्स योर लक. But mostly there are no-fly zones. So whenever India tests missiles, for instance, on the coastal side of Odisha, तो हम उस पूरे एरिया को no-fly zone बना दें, because obviously there are missiles being launched. Right? So we need to be careful about it. लेकिन ये जो वीडियो है वो वीडियो हमारा इंडिया का है ही नहीं. इसमें इनफैक्ट काफी सारे एंगल्स थे. ये आपने एक वीडियो दिखाया हमें, लेकिन मेरे पास कम से कम 3 अलग अलग वीडियोस आए अलग अलग स्पेस लॉन्चेस के, और वो सभी ने बताया कि ये चंद्रयान है. तो जब तक मैंने वो कंफर्म नहीं किया तब तक मैं, आपको पता है कि मैं वो फॉरवर्ड नहीं करता हूँ या किसी से शेयर नहीं करता. तो मैंने जब देखा कि उसको ये मैंने पहले कहीं तो देखा है, एंड द क्लोजेस्ट logically you think about it, the closest anybody can come near a spacecraft is actually in the US. Because whenever there is a private space launch, people can go close by, but not very close by to the spaceport. So what it turns out is that at least 2 of the 3 launches that are the videos that are being shared on Twitter and WhatsApp and Facebook and other social media are from SpaceX, which is the company run by Elon Musk. और उनका जो स्पेस लॉन्च था, तो तब किसी ने प्लेन से उसको शूट किया था, और वो वीडियो जो है वो अभी शेयर किया जाए. द अदर थिंग इज दैट the contours and the geography of that area is actually in Florida. Somebody who's familiar with America will see that. अगर आप मैप भी देखें, वहाँ पे केप कैनावरल जो है, अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ से लॉन्चेस होते हैं. तो वहाँ पे अगर आप देखें तो दैट एरिया इज समथिंग लाइक दिस. I had again the good fortune of going to Florida to go to Cape Canaveral and see all the rockets out there. It's for me it was more than a religious experience. To go there and actually see everything. You can actually go and touch a moon rock. So this is the place that it was launched from. तो ये श्रीहरिकोटा नहीं है. हालांकि हमको बहुत गर्व है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के ऊपर कि आज इसरो उस मकाम तक पहुंचा है कि सारी दुनिया जो है वो इसरो की तरफ देख रही है, इसरो को कंग्रेचुलेट कर रही है और कह रही कि देखो बॉस, यू हैव डन इट. So we are getting all the credit. So we don't need extra credit for ISRO by throwing up, videos that are not contextual.
हम हमेशा संदर्भ की बात करते हैं. तो But it what's is the amazing is that videos. Yeah. the person who is getting credit, of course, is our Prime Minister, which I think is amazing because सारे लोगों ने जिन्होंने भी ये ट्वीट किया है, उन्होंने मोदी जी को definitely tag किया है, and I think that it's wonderful, you know, that they have made it a point that कि इस दौर में जो हमारे लीडर हैं, उनका नाम जरूर इस ट्वीट के साथ जोड़ा है, which kind of makes me wonder about, you know, where this certain section of tweets are coming from. But anyway, let's move on. You spoke about touching a moon rock. You know, आज हम WhatsApp University पर एक बहुत ही interesting episode पर आ चुके हैं because we're talking about SpaceX, we're talking about SpaceX and we're talking about Elon Musk, we're talking about Sriharikota, we're talking about ISRO. And अगर आप एक space, you know, nerd हैं, अगर आप you know space missions के nerd हैं, then maybe you can hit up Sachin on his Twitter handle, which is Sachin Kalbag on Twitter. But I must tell you this. 14 तारीख को हमारा ये रॉकेट जो है ये लॉन्च हुआ था, all right, and I think within a few days, maybe on the 17th, which is on Monday or Sunday, I remember taking this tweet and bookmarking it simply because I said कि इसके बारे में सचिन से बात करनी है, and it was a tweet about a piece of debris, यानी कि एक mysterious piece of debris जो एक ऑस्ट्रेलियन बीच के शोर्स पर आकर you know पाया गया. And the first thing that people said, and I'm talking about, you know, in India, is that अरे कहीं ये चंद्रयान ही तो नहीं है. So मेरा दिल तो बैठ गया. I was just like, oh my God, that's not the case. And I'm sorry, I know we didn't discuss about this before we got on the podcast today, but in case you're watching us on the screen, this is the debris. All right, this is how it looks like. And it's a huge piece of debris. It is in Greenhead, okay, Yeah. जो पर्थ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, and it could be part of a foreign space launch vehicle. अब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने कहा था, you know, I guess because recent memory for all of us is Chandrayan, foreign space vehicle, that's why they, you know, इन दोनों चीजों को जोड़ा गया. I freaked out. मैंने कहा, oh my God, I hope the Chandrayan is not down. All right. I don't think we figured what this is, but some people also said कि ये MH70 का debris भी हो सकता है. So there are lots of theories on this. Just want to put it out there saying that if someone puts this out saying that is this the Chandrayan, just say no, it's not the Chandrayan. है ना? And also, it is not commercial aircraft debris. So this is something that the Australian police have confirmed. और उन्होंने कहा है कि MH370 का, because MH370 never went to Australia because it started out from Kuala Lumpur and it went all the way, you know, towards the Indian Ocean side, not to the Pacific Ocean side. So it cannot be MH370 debris at all, because MH370 debris, if at all it is to be found, will be found either, you know, near Madagascar or Maldives or Sri Lanka or, you know, somewhere near, but not near Australia. हालांकि उसमें ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट ये है कि उसमें काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस थे उस एयरक्राफ्ट, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो ऑस्ट्रेलियन इंटरेस्ट इन दिस. जब ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी इसे कंफर्म करेगी, बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस बिफोर फाइंडिंग आउट एग्जैक्टली, यू नो, व्हाट इट इज, यू नो. और अगर ये फॉरेन स्पेस लॉन्च है तो शायद इंडिया से भी हो सकता है या फिर और किसी कंट्री से भी हो सकता है, बिकॉज देयर आर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड एट, यू नो, एट रेगुलर इंटरवल्स. इनफैक्ट अगर आप स्पेसएक्स का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2 या 3 सालों में उन्होंने करीबन 1500 से 2000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं. Not rockets, because each rocket will have multiple satellites. ISRO itself holds a record of carrying 105 satellites in a single rocket. So, you know, per rocket, you can have multiple satellites. So, you know, it's something like that. So we'll need to be very careful about interpreting ये क्या है. शायद चंद्रयान पे जो LMB का जो रॉकेट का जो स्टेज है वो भी गिर सकता है. We don't know. आपको याद होगा 1979-1980 में स्काईलैब का बहुत डर होता था. मैं जब छोटा था तब हमारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन वही कहते कि स्काईलैब गिरने वाला है. स्काईलैब वाज एन अमेरिकन सैटेलाइट एंड इट हैड लॉस्ट कंट्रोल एंड इट वाज सपोज्ड टू फॉल एनीवेयर ऑन द अर्थ. ओके,
सो हम बच्चे थे तो हम ड्रीम कर रहे थे कि शायद मुंबई में गिर जाए। मैं गोरेगांव में, एक सबर्ब है मुंबई में, गोरेगांव, मैं वहां पे स्कूल में जाता था। तो हमें यही लगता था कि वो स्काईलैब हमारे स्कूल पे आके गिर जाए तो हमको 10 दिन की छुट्टी मिल जाए। सो Wow. दोज आर सिंपलर No, टाइम्स। it's amazing how you said that because uh, एक तो ये है, and you said some time ago that how it's a proud moment in our space agency has worked really hard. I must talk about because it is a proud moment for India for sure. लेकिन there was a professor in Bangalore जिन्होंने पता नहीं क्यों, मतलब उन्होंने मे बी ही जस्ट वो उम्र से या अपनी जिंदगी से परेशान है, और उन्होंने कुछ तो एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला जहां पर उन्होंने कहा कि क्या मतलब पागल हो रहे हैं लोग, मुझे तो लगता है इस बार भी चंद्रयान फेल हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वी वर अपसेट, ये बात आई, निकली, न्यूज में भी आई कि बंदे ने ऐसे कैसे लिखते हैं, बट आई पुट इट डाउन टू समटाइम्स यू बिकम cynical, एंड आई डोंट blame any professor in this country for being cynical, because I mean if you just look at the life of teachers in India and the state of education, they have it the hardest. इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए बताई, whatever. So not just defending him, but what is interesting is इस बंदे ने ऐसे लिखा अपने सोशल मीडिया पर, और एक मिनिस्टर ने एक्चुअली उनको बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड आई थॉट इट वाज क्रेजी हाउ a leader from the ruling party actually wrote a letter to the Karnataka education minister saying that ये जो lecturer है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। um I have my own like point of view on this, but I just want to say that everyone is entitled to their opinion in democracy, you know. Even if, because I don't know what to say to this, but I was just interested in like just ending the episode by saying कि आज सोशल मीडिया पर आप जो भी बोलते हैं, स्पेशली इन प्रोफेशनल लेवल, अगर आप प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं तो उस प्रोफेशन पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, इज ऑल आई वांट टू से। I mean, see, you know, I had a when I was in college, no, मेरे पास एक cocker spaniel pet dog था, and she was the cutest dog ever. Like all pet owners say that their dog is the cutest. I'll say she was the cutest dog ever. और हर दिन जब मैं उसे वॉक पे लेके जाता था शाम को, तो करीबन 1 महीने तक हमारे पाथ पे ही ना एक पाला हुआ हाथी, एक माहौत लेके आता, and he would go and beg. I know. That mahout would go and beg using that elephant. That poor elephant had no other job, go and beg for food and money from people. So that elephant must be 9 feet tall, 10 feet tall, and huge, elephant, 1500, 2000, 3000 किलो का हाथी। और मेरी जो पेट थी कुकी, वो उसकी हाइट थी 1.5 फुट। लिटरली शी वाज अ 1.5 फुट, कॉकर स्पैनियल। और वो रोज हाथी को देख के ना वो भौंकने लगती, और मतलब चिल्ला चिल्ला के, मतलब शी कुडंट कंट्रोल हर, आई डोंट नो, एंजाइटी, एंगर, हु नोस। एंड दैट एलिफेंट वुड जस्ट लुक अराउंड, मेरे हाइट का तो यहाँ पे कोई नहीं है, एंड द एलिफेंट वुड जस्ट वॉक अवे। द रीजन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी is that when 1.4 billion people in this country and about 3 billion, 4 billion people around the world are congratulating ISRO, if you get affected by one professor sitting in a corner in his air conditioned office wherever he is criticizing ISRO for whatever, who cares? You should be like that elephant, who did not care for my pet dog. I was very hurt that, the elephant did not care for my pet dog. But the elephant said, in my world, that dog means nothing. So in the world of ISRO, when it has gone from, gone places, why do we care about one small, इससे होता क्या है ना, that professors' views get more More publicity, more mileage more for publicity. support. Yeah. And also I feel
I feel कि yes, it is important. It's a moment of nationalistic pride, but you don't. Our pride is intact. It's enough. Yeah. वो इससे नहीं affect होने Why वाला. should we ask for an explanation? The This is idea what is called the a idea of, Streisand effect. yes, the idea of policing someone for expressing their opinion to me still doesn't hold okay. Yeah. So I just wanted to say that. But overall, I think we've spoken about एक रॉकेट ने हमें कितने दिशाओं में भेजा. हम आज ऑस्ट्रेलिया के एक बीच तक पहुंचे, हम श्रीहरिकोटा से निकले थे, एंड हियर वी आर, हम कर्नाटका में फाइनली लैंड हुए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक पहुंच गए. That is why I love this podcast. That is why I love it. We didn't plan on it, but it has become a deep dive on the Chandrayan 3, and I'm so glad that we spent a little time on this, because अक्सर क्या होता है कि हम सुर्खियों में पढ़ते हैं, and that's all we know. But I'm so glad, Sachin, you took the time to tell us a little bit more, और हमारी knowledge हमेशा की तरह बढ़ाई. Of course, we'll come back अगले हफ्ते. Until then, अपने जितने भी missions हैं उन्हें successful बनाइएगा. I am Rotalks, that's ROTALKS on Twitter, Instagram, as well as on Threads. Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. If you'd like to clarify, verify a piece of information, ये service हम बिना किसी charge के आपके लिए कर लेते हैं, तो आप हमें tweet कीजिएगा if you feel like it. And of course, this podcast is brought to you by HT Smartcast, and we will see you next week. So thank you so much, Sachin. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye.